In 2019, the Indian government achieved a milestone of electrifying nearly 100% of its households, a feat that has been widely acknowledged and seemed impossible to achieve a decade ago. Today, not only is the grid omnipresent, but India also has surplus generation capacity. Despite this commendable progress, the per capita consumption of electricity in India is only 1/3 of the world average. The consumption in rural areas is even lower. This is because large populations within the rural communities are still not receiving reliable electricity services by the grid. As we all know, per capita electricity consumption is a reliable proxy for socio-economic progress of a community. The lack of reliable grid power pushes rural communities, especially the enterprises, to look towards diesel and other alternative sources of electricity. In fact, the diesel generator market in India continues to grow at the rate of 12.5% year on year. India's situation of high grid access, low per capita consumption, and dependency on alternate sources of electricity in rural areas is not unique. We have noticed in other Asian countries with large populations, grid connectivity always does not translate to reliable electricity access. For example, the island nations of Indonesia and the Philippines that have 95% plus grid access rate are also experiencing similar challenges of low per capita consumption and dependency on other alternate sources. Further, all these three large countries, India, Indonesia, and the Philippines, have high proportion of their generation coming from fossil fuels, posing a challenge for environmental impact mitigation. So, the important question is, how do we enable these communities to get access that is faster, reliable, and cleaner to support their economic progress? From our experience of working in rural India for several years, we have seen that distributed renewable energy solutions, commonly known as DRE, such as mini grids and the rooftop solar, have the potential to reliably serve the community's electricity needs. Moreover, these can be implemented quickly in just 2 or 3 months. Having facilitated over 500 mini grids in central and eastern India, we have seen that they play an important role in increasing livelihood opportunities and improving the quality of healthcare, safe drinking water, and education. Their application in irrigation makes an even greater impact on rural community. The village economy is largely dependent on agriculture or micro enterprises. DRE systems provide reliable power to these sectors at a lower cost compared to diesel or other fuel-based systems. Here is a short video showing the powerful impact that mini grids have on the overall well-being of the community. The transformational power of clean and reliable electricity. Access to reliable power is the lifeline of rural India's progress. It empowers individuals' lives and charges the rural economy. To understand how, we need to know the challenges they face due to the lack of it. अंधेरा में बहुत परेशान था कि कुछ नहीं दिखाई देता था, पढ़ने लिखने में भी बच्चे सबको दिक्कत होता था, फिर घूमने फिरने में भी अंधेरा में थोड़ा डर लगता था। और हम महिलाओं को शौच जाने में भी दिक्कत होता है जब लाइट नहीं होने से। लाइट चली गई तो मान लीजिए कि हम जैसे कारपेंटर कहीं काम कर रहे हैं, कोई लकड़ी तैयार कर रहे हैं, तैयार नहीं हो पाएगा, कहीं ड्रिल से होल मारना है, कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, एकदम बिल्कुल परेशानी हो जाएगी। कोई भी मेन शहर जाने के लिए 50 से 60 किलोमीटर दूरी होती है, और अगर किसी को बीमारी है, अगर स्पेशलिस्ट किसी बीमारी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए आपको शहर जाना ही पड़ेगा। देखिए, ये विद्यालय में लगभग 700 बच्चे हैं जो हम लोग होमवर्क देते हैं, और फिर जब दूसरे का दिन हम लोग पूछते हैं कि आपने होमवर्क नहीं किए, बोलते हैं सर बिजली नहीं है। पानी शुद्ध हम लोग को मिल नहीं पाता है, उसमें आयरन का मात्रा ज़्यादा हो जाता है,
कल के हम लोग पानी पीते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि शुद्ध हम लोग को पानी मिले। बिजली पूरे टाइम ना आ रही है, हमका पानी ख्यातन की जरूरत है, सिंचाई की जरूरत है। पहले साहब परेशानी यह रहा है, जल नहीं रहा है तो यहाँ विकास कोई बढ़िया नहीं हो पा रहा है। Smart Power India looked into each of these problems. Apart from providing reliable electricity access, we also focused on strengthening the entire value chain, which includes partnerships, business guidance, microfinance support, and market linkage for economic development. लाइट होने से थोड़ा अच्छा लगा, दिखता है, कहीं डर उर नहीं लगता है घूमने फिरने में, बहुत दूरी तक दिखता है, इसलिए लाइट नहीं हो पकड़ते हैं तो चल बुल पाते हैं। और इस समय जब से मैं सोलर लिया हूँ तब से जनरेटर का सिस्टम ख़त्म, और उससे जनरेटर चलाने से बहुत आवाज़ भी करता था, हम लोग डिस्टर्ब रहते थे, इतना परेशानी होता था। जो भी अपना इक्विपमेंट्स है, सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, सबको लाइट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ सोलर लाइट का यूज़ किया है। जो जब से लोकल डिजिटल डिस्पेंसरी आया है तो एटलीस्ट क्या है कि लोगों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुहैया हो जाता है कम दाम में, प्लस बिना कहीं गए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अपना रात भर पढ़ लेते हैं, अच्छे मार्क्स के साथ पास करते हैं। और अभी हम लोग का जो कंप्यूटर है वो अच्छा चल रहा है, बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मिल रही है। सारे ऊर्जा के तरफ से मुझे ये आरओ प्लांट मिला है और ये उधर पावर प्लांट भी मुझे मिला है। एक दिन में 2000 लीटर पानी शुद्ध कर लेते हैं। जितना पानी चाहते हैं उतना पानी मिलता है। बढ़िया हमने पलेवा की है, गेहूँ बोएंगे, अब सिंचाई होगी। पहले हमारे पास 5 से 7 आदमी थे, जब से मैं सोलर लिया हूँ इस समय हमारे पास 15 से 18 के करीब में आदमी हैं, और एक दुकान था उस समय, इस समय मेरे पास 2 दुकान है। हो सकता है कि 2 महीने के बाद एक और बढ़ने वाला है। तब से एजुकेशन में या शिक्षा के संबंध में बहुत कुछ यहाँ आगे निकल चुके हैं लोग। हाँ, लाइट होने से हम लोग नाच गान भी कर पाते हैं, नाच देख पाते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी तो लाइट आ गया तब सुविधा हो गया, रात भर हम लोग नाचते देखते हैं, त्यौहार मनाते हैं। Mini grids complement the grid in bridging the access gap through renewable energy. Even in off-grid areas such as parts of sub-Saharan Africa, electricity can be provided within 90 days by establishing a mini grid, whereas the grid would take several years or even decades to reach. Mini grids thereby, with their flexible models of delivery, become one of the most effective solutions to electrify off-grid geographies. To enable access, enhance prosperity, and pave a cleaner pathway for growth of electricity consumption in developing countries, the Rockefeller Foundation launched the Global Energy Alliance for People and Planet, in short GAP, at the COP26, in partnership with IKEA Foundation and the Bezos Earth Fund. Over the next decade, the alliance will unlock $100 billion in public and private funding and tackle 3 issues concurrently. First, reach 1 billion population with renewable energy. Second, avert 4 billion tons of carbon emissions. And third, create opportunity for 150 million green jobs. DRE solutions present a faster route to provide reliable access and at the same time enable a green pathway for growth in electricity consumption. What we need now is a sustained commitment from all key stakeholders, the governments, the financial institutions, the private sector, and the philanthropies to prioritize DRE for progress.